हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एडवाइजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। ब्लैक बुक सीरीज चल रही है जिसमें से हमने 700 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज 701 से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट यानी सुखवादी। पे अटेंशन, पे अटेंशन। हीड यानी सावधान रहना। पर्सन हु इज द नेचुरल सक्सेसर टू एसेंट्रियल प्रॉपर्टी। हियर यानी वारिश। प्रेफरिंग और अट्रैक्टेड टू सनलाइट। हेलोफिलियस यानी सूर्याभिमुख। द थेरेपिस्टिक यूज ऑफ सनलाइट। हेलियोथेरेपी यानी सूर्य चिकित्सा। सेवन साइड फिगर। हेप्टागन यानी सप्तभुज। प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ट्रेड प्लांट स्पेसिमेंट। हार्बेरियम यानी वनस्पति संग्रहालय। ग्रुप ऑफ कैटल और शिप। हियर्ड यानी झुंड। बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियन। और ओपिनियन contrary to accepted doctrines। heresy यानी विधर्म। think of different nature। heterogeneous यानी विविध। allowing और assisting और discover। heuristic यानी खोज करने में सहायक। geometrical figure with 6 side। hexagon यानी षष्ठभुज। to spend winter in a dormant state। hibernate यानी शीत निद्रा में होना। condition of sleep during certain part of the year। hibernation यानी शीत निद्रा। a person claiming to be superior in culture and intellect to other। हाइब्रो यानी बुद्धिमान। an act of violence to take control of a plan। hijack यानी विमान का अपहरण। part of country behind the coast or a river bank। hinterland यानी आंतरिक इलाके। the sound made by a snake। हिस यानी सांप की फुसकारी आवाज। very dynamic यानी हिस्ट्रोनिक यानी नाटकीय। to secretly store more than what is allowed। heard यानी खजाना। destruction और slaughter on a mass scale। holocaust यानी विध्वंस। killing of a person by another। homicide यानी मानव हत्या। next, all things or people of the same or similar kind of nature। homogeneous यानी सजातीय। things which are of the same kind and of the same dimensional। homogeneous यानी एक समान। words that are split and pronounced in the same way but have different meanings। homogeneous यानी समुच्चारित विभिन्नार्थक शब्द। a mass of wax cells built by honeybees to store honey। honeycomb यानी शहद का छत्ता। a payment given for professional service that are rented nominally without charge। honorarium यानी मानदेय। holding an office without receiving a pay। honorary यानी माननीय। a cry of an owl। hoot यानी उल्लू की बोली। a large group of people। horde यानी भीड़। the line where the land and sky seems to meet। horizon यानी क्षैतिज। something that is extremely unpleasant। horrendous यानी भयानक। the study of growing garden plants।
हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी बागवानी करने वाला, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर, हॉस्पिटेबल यानी सत्कार करने वाला, रिसीविंग गेट्स वार्मली, हॉस्पिटैलिटी यानी अतिथि सत्कार, समवन टेकन अ प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स, हॉस्टेज यानी बंधक, अ वुमन हु इंटरटेन्स गेट्स, हॉस्टेज यानी सत्कारणीय, वन हु लॉस टेम्पर वेरी सून, हॉट हिडेड यानी उग्र स्वभाव या उग्र स्वभाव का, annoyed or irritated and quick to take offense, and pretty things, हुफी यानी झुंझलाया हुआ, the organic component of soil formatted by the decomposition of leaves and other plant material, ह्यूमस यानी सड़ी पत्तियों की मिट्टी, assembly or parliament in which no party has got clear majority, hung यानी लटका हुआ, in a quick manner, hurriedly यानी हड़बड़ी में, a box or crave for rabbits और स्मॉल एनिमल, हच यानी छोटे जानवरों के रहने का घर, द साइंस ऑफ सर्विंग एंड चार्टिंग बॉडीज ऑफ वाटर, हाइड्रोग्राफी यानी जल राशि विज्ञान, एक्सट्रीम फीवर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से भय, अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्राइस ऑफ गॉड, हैम यानी स्तुति का गीत, एन exaggerated statement not to be taken seriously or literally, hyperbole यानी अतिशयोक्ति, excessive preoccupation with one's health, hypochondria यानी रोग भ्रम, a person who suffers from an imaginary illness or a person who is abnormally anxious about his health, हाइपोकॉन्ड्रियक यानी रोग भ्रमी, a person pretending to be somebody he isn't, hypochondria, hypocrite यानी पाखंडी, a tentative theory about the natural world, hypothesis यानी परिकल्पना, one who destroys image or attacks popular belief, or a person who criticizes traditional belief and customs, इकोनोक्लास्ट यानी रिवाज तोड़ने वाला, a person peculiar habits, इसका मीनिंग होता है आइडियोसेंक्रेसी यानी अनोखापन, अ मोड ऑफ बिहेवियर और वे ऑफ थॉट पेक्यूलर टू एन इंडिविजुअल, नॉट सब और एबनॉर्मल इन एनी वे, आइडियोसेंक्रेटिक यानी विशेष स्वभाव का, ये एक एडजेक्टिव है, an image of a god used for worship, idol यानी प्रतिमा या मूर्ति, a practice of worshipping statue as gods, idolatry यानी मूर्ति पूजा, extremely happy, peaceful और picturesque, idyllic यानी शांतिपूर्ण, a small round house or shelter built from blocks of hard snow by the Inuit people
of North America. Igloo यानी हिमकुटी. Not to pay attention to someone or something. Ignore यानी नजरअंदाज करना. Handwriting which is difficult or impossible to read. Illegible यानी अपठनीय. That which is unlawful. Illicit यानी अवैध. A person who cannot read or write. Illiterate यानी निरक्षर. Britain up with lights. Illuminate यानी प्रकाश करना. Picture given in a book for the purpose of explaining things. Illustration यानी चित्रण. Existing only in the mind. Imaginary यानी काल्पनिक. A very complex situation. Imbroglio यानी उलझन. Something which can be copied. Imitable यानी अनुकरणीय. The action of using someone or something as a model. Imitation यानी नकल या अनुकरण. A foreigner who settle in a country, or a person coming to a foreign land to settle there. Immigrant यानी अप्रवासी. That which cannot be moved. Immobile यानी अचल. Matter which is against moral values. Immoral यानी अनैतिक. Resistant to a particular infection. Immune यानी प्रतिरक्षित. Protection or exemption from something, especially an obligation or penalty. Immunity यानी प्रतिरोधक क्षमता. Transfix or pierce with a sharp instrument. Ample यानी छेदना. Not supporting any side in an argument. Impartial यानी निष्पक्ष. The policy of extending a country's empire and influence. Imperialism यानी साम्राज्यवाद. Not allowing fluent to pass thought, or a person who remains unmoved and unaffected by other people's opinion, suggestions. Impervious यानी अवैध. Not allowing fluid to pass thought. Impervious यानी अवैध. Next, a person who dishonesty pretend to be somebody else. Imposter यानी बहुरूपिया. Strong and impossible to defeat. Change or that which cannot be taken by force. Impregnable यानी अवैध. Made or done without previous preparation. Impromptu यानी बिना तैयारी के. Make better. Improve यानी बेहतर बनाना. One who is too careless to plan for the future. Improvident यानी लापरवाह. Shamelessly rude यानी imprudent यानी बेहुदा. Without risk of punishment. Impunity यानी दंड मुक्ति. Incapable of being approached. Inaccessible यानी दुर्गम. Not endowed with life or lifeless object. Inanimate यानी अचेतन. Unable to speak distinctly or express oneself clearly. Inarticulate यानी व्यक्त करने में असमर्थ. Something that cannot be heard. Inaudible यानी अश्रव्य. A deity or spirit embodies in human form. Incarnate यानी अवतार लिया हुआ. Motive or incitement to action. Incentive यानी प्रोत्साहन. Lack of civic mindedness or a patriotism. Incivism यानी देशद्रोह.
traveling under a name other than one's town, इकॉग्निटो यानी गुप्त रूप से, something that is expressed in a confusing way, इनकोहेरेंट यानी असंगत, something that is difficult to understand, इनकॉम्प्रहेंसिबल यानी समझ से बाहर, one who cannot be corrected or one who is beyond reform, इनकॉरिजिबल यानी असंशोधनीय, ये 11 बार आया है। इनकॉरिजिबल यानी असंशोधनीय, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल एक एडजेक्टिव है, ये 5 बार आया है। अविश्वसनीय, owing money to someone, इंडेबिट यानी ऋणी, incapable of feeling tired or exhausted, इनफैटिगेबल यानी न थकने वाला, इनडिफिटेबल इनडिफिटिगेबल यानी न थकने वाला।